Hello everyone, my name is Saurav Umar. Today I will teach you what is the coroutines and why it is important in our life if we are building any application from the scratch. And today I will teach you how to implement coroutines with the Kotlin code. So before going to coroutine, we should know about the what is the arc Java and what is the thread management. So पहले हम लोग समझते हैं थ्रेड क्या होता है. सो थ्रेड जो होता है वो क्या होता है कि आपके जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं, जो हैवी ऑपरेशन टास्क होते हैं, उन टास्क को वो यूआई थ्रेड में ना करके वो एक नया थ्रेड में करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड थ्रेड. इन द एंड्रॉयड द गाइडलाइंस इज़ लाइक कि अगर आपका कोई टास्क जो यूआई से रिलेटेड नहीं है उसे आपको बैकग्राउंड थ्रेड में करना चाहिए. अदरवाइज अब हमारे कोड में एएनआर्स आ जाते हैं. सो हमारे लिए थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ वी आर बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन. सो जब हम लोग एंड कॉटलिन से पहले जब जावा में हम लोग कोड कर रहे होते थे, तो उस समय हम लोग आर जावा यूज करते थे. सो आर जावा इज़ नथिंग बट दैट हेल्प मी क्रिएट एनी थ्रेड. सो आर जावा एक रिएक्टिव अप्रोच थी, जिससे हम लोग कुछ ऑब्जर्वर्स पैटर्न्स यूज करके एंड अपना टास्क को बैकग्राउंड थ्रेड में कर लेते थे. सो अगर मेरे पास कोई जॉब है, लाइक if I have one I want to one user data from the API call, then we will that time we were used RX Java, because RX Java हमारे पास एज अ थ्रेड का काम करता था एंड API से डेटा लाने के लिए हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड का यूज करते थे यूजिंग द RX Java. So nowadays we totally moved in the Kotlin. सबका प्रोजेक्ट ऑल आर यूजिंग द Kotlin लैंग्वेजेस. तो हमारे पास आज की डेट में क्या है कि हम लोग कोरोटीन्स यूज करते हैं. तो कोरोटीन्स क्या होता है, आर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट बोथ आर यूजिंग फॉर द थ्रेड मैनेजमेंट. द कोटलिन डेफिनेशन ऑफ द कोटलिन इज आल्सो द सेम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोटलिन इज दिस. Kotlin is a very simple and easiest way to move a task in the background, or you can say like that, Kotlin is the simple and easier way to handle the task in the background, that is called coroutines. सो कोरोटीन्स आपने समझा कि कोरोटीन्स एक ऐसा सिंपल एंड इजी वे है जो हमारे टास्क को बैकग्राउंड में मूव करता है. But it is what is the difference between RX Java and coroutines? That is the first question. Multiple time asked in the interview. So the coroutines is like कि आपका जो थ्रेड है ना, उस थ्रेड को वो आपको होल्ड करके नहीं रखता है. मीन्स द कोरोटीन्स इज नॉट बाउंडेड विद द थ्रेड. अब ये क्या होता है बाउंडेड एंड नॉन बाउंडेड, ये समझ नहीं आ रहा. ठीक है, RX Java में चलते हैं. RX Java में क्या होता था, कोई भी एक टास्क होता था, उसमें एक थ्रेड को बाउंड कर दिया था. सपोज़ करिए आपको एक API से डेटा लेके आना है यूजर्स का. तो अब जब आप थ्रेड अब जब एक नया RX Java क्रिएट करेंगे, RX Java में थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो जब तक आपका पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपका वो थ्रेड आपका कंटिन्यूस एक RX Java के पास ब्लॉक्ड रहेगा. इवन योर जॉब इज़ गोइंग टू IO स्टेट और एनी ऑफ द वेटिंग स्टेट, तब भी आपका वो थ्रेड ब्लॉक रहेगा. एंड जब आपका टास्क कंप्लीट होता है, तब वो थ्रेड रिलीज होता है. तो दैट इज़ द मैकेनिज्म इन द RX Java. बट इन द कोरोटीन्स में हमारे पास जो भी टास्क होता है, इफ द टास्क इज गोइंग, सपोज द टास्क इज गोइंग टू द IO स्टेट, देन thread will be released and will be occupied with another task. तो होता क्या है कि हमारे पास देयर आर सम सस्पेंड फंक्शन. हम सस्पेंड फंक्शन की बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तभी आप सिंपल टर्म्स में ये समझिए, कोई भी आप एक टास्क कर रहे हैं, टास्क में बीच में आपको API कॉल मारनी पड़ गई. तो API कॉल में हो सकता है कि वो 300 ms या 400 ms कुछ भी टाइम लगेगा. तो उस टाइम के लिए वो जो थ्रेड है वो अनबाउंड हो जाएगा उस टास्क से. एंड जब भी वो टास्क वापस आएगा, देन एक नया थ्रेड या फिर वो सेम थ्रेड जो भी उस समय अवेलेबल होगा, वो थ्रेड उसको असाइन हो जाएगा एंड कंप्लीट कर देगा. तो दैट इज़ द मैकेनिज्म इज, मतलब दैट्स वाई वी कैन से कोरोटीन्स is the light way. It also the way we can say like coroutines the cooperative functions. Cooperative function means there are 2 or 3 functions and all want a thread to execute. then एक फंक्शन को एक थ्रेड मिल जाएगा, और उस थ्रेड में मान लो कोई IO टास्क आ गया,
तो थ्रेड रिलीज करके वो जो थ्रेड है वो फंक्शन बी को मिल जाएगा, बी उस टास्क को कंप्लीट करेगा। बी थ्रेड में मान लो अगर कोई आई स्टेट आ गया तो बी क्या करेगा, उस थ्रेड को रिलीज कर देगा, उसी उस सेम थ्रेड को रीयूज कर लेगा। तो तीन फंक्शन जो कोऑपरेटिव हो गए हैं, जो एक ही थ्रेड में काम कर रहे हैं और तीनों का टास्क एंड टू एंड कंप्लीट हो रहा है। तो दैट इज अ कोऑपरेटिव फंक्शन यूज्ड इन द कोरोटीन्स। और अगर वेयर एज आर एस जावा, अगर आपने तीन फंक्शन बनाए हैं तो देन और तीनों को आपको बैकग्राउंड में अगर टास्क करना है तो वी नीड टू क्रिएट थ्री थ्रेड्स। तो दैट इज द आर एक्स जावा. So coroutines is obviously coroutines is lightweighted because of three functions are using only one thread, and in that Rx Java for three functions we need to create three threads to execute a task. Okay, so with सो अब हम डीप में आर एक्स जावा का नहीं जाएंगे, आर एक्स जावा का कोई डिटेल वीडियो हम लास्ट फिर कभी आगे बना देंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कोरोटीन्स के बारे में, क्योंकि आर एक्स जावा आज के डेट में डिप्लीकेट हो गया है। तो हम लोग क्योंकि कोटलिन में कोड लिख रहे हैं तो कोटलिन में हमारे पास कोरोटीन सपोर्ट ही होता है। यस, अगर आप कोटलिन में कोड लिख रहे हैं तो कोरोटीन से ही आपका सपोर्ट करेगा। अगर आपका कोड कोई जावा में है देन आपको कोरोटीन्स का कोड आपका सपोर्ट नहीं करेगा। उसे आपको या तो कोई हेल्पर क्लास बना के आपको कोरोटीन्स बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आर एक्स जावा यूज करना होगा। ओके, कोरोटीन्स पॉज हो जाएगा, चलो इसको पॉज ही कर देंगे। ओके, सो here is my one blog. I will share the blog link in my description, so you can check out and you can read this blog. So first one is I define the Kotlin, what is a coroutines, and why it is used and what is the use of the coroutines. Everything I mentioned in this blog. Again I will tell you कि coroutines क्या होते हैं. Coroutines is the easy and simplest way to do the task in the background. ओके, सो किसी भी टास्क को बैकग्राउंड में करने के लिए एक ईजी और सिंपल तरीका होता है जो कि हम कोरोटीन्स से करते हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें तो ये डेफिनेशन पता चल गया, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट। सो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हेन टू यूज कोरोटीन। सो हमने एक टेबल बनाया हुआ है कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। तो व्हेन टू यूज कोरोटीन्स, सेकंड पॉइंट इज, थर्ड वन इज द बेनिफिट ऑफ कोरोटीन्स. I will tell you in the explain benefits of coroutine. This is the most important question asked by the interview. Then we should know about this very deeply. Fourth one is the basic of the coroutine. So in the basic of the coroutine there are the multiple key points we should know when you are using the coroutines. Fifth one, the coroutine scopes. What is the coroutine scope? You should know about how many types of the coroutine scope and where is used, when we will use the which coroutine scope. And sixth one is the how to set up the coroutines, what is the libraries and all. And in the seventh point I will tell you how to make a API call using the coroutines. And the eighth point is the simple network calls, how to make a simple network call in the sequence manner or in the concurrent manners. I will give you the belief of these points in detail after some time when I will cover this topic. And ninth one is the handling of the coroutines. If there are any exception are coming in the coroutines, then how to handle is a single call except error handling or multiple calls error handling. I will tell you later. And 10 point is a handling the timeout, and 11 is the conclusion. I have total 11 points we need to cover. If you want to learn in the detail how to work, how to implement the coroutine, we should know the all 11 points. Then you will cover, you will start implementing the coroutine in your project. Okay, so first one is the introduction. As you know, I told earlier, coroutine is the very simplest and easiest way to do the task in the background, that is called the कॉल दी कोरोटीन्स. बिल्कुल हिंदी में समझिए कि अगर कोई एक टास्क जिसको हम लोग बैकग्राउंड में करना चाह रहे हैं तो वो उसको करने का एक तरीका जो है वो कोरोटीन्स है. ठीक है, तो एंड ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एंड इजी तरीका है. मतलब दिस मेक द कोड मोर रीडेबल, इजियर टू राइट एंड
सिंपलर टू मेंटेन। सो आपको कोरोटीन्स को लॉन्च करने के लिए, किसी थ्रेड को लॉन्च करने के लिए, यू जस्ट राइट अ वन सिंगल वर्ड, देन उसमें आपका कोरोटीन्स लॉन्च हो जाएगा। दिस इज अ वेरी रीडेबल, वेरी सिंपल एंड इजी टू मेंटेनेबल। इफ यू वांट टू चेंज द थ्रेड, देन दिस इज वन लाइन ऑफ वन वर्ड ऑफ द कोड। we you will add the one word of code and you will convert your thread to the another thread. So when to use it, the second point is everyone is asking कि कब हमें यूज करना चाहिए, कौन सा थ्रेड हमें कब यूज करना चाहिए, और कितने टाइप के थ्रेड होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले आपको बताते हैं, देयर आर द मल्टीपल टास्क वी आर डूइंग इन आवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट वन इज द नेटवर्क ऑपरेशन, second one is the database operation, third one is the heavy operation, and fourth one is the concurrency. So network operation is like if you are making any API call and get the result, that is called the network operations. And what is the database operation? That is the reading and writing the data from the database, that is the database operation. And other than heavy task is like running a task. If you have one business logic where you want to read the data from dictionary, or you have one array list of 1000 numbers, 1000 of strings, and you want to search one name, and according to this you have to write a logic. That type of things is the CPU heavy task. Then this type of the task will be called the heavy task. And what is the concurrency? Concurrency means two or more than two tasks run in parallelly and get the result parallelly or at a time, whatever the requirement. So if I am giving the example, suppose if you are click on the profile section of any in your activity. In the profile section there are two API call. First is the get the data from the API of the what is the name, what is the name, what is the date of birth and all. And second one is the store the events of the click of your of your event. So there are the two tasks, they can run parallelly, that is called the concurrency. So that I hope you will understand, you understand where to use coroutines. So go to the next part. I'm going to the next part, that is the benefit of the coroutines. So what is the benefit of the coroutine? That is very simple. I told this is a very simple. You just need a one single line, one single word to change the coroutine or launch the coroutine. That is the very simplest way to create or to change the thread. So this is the way, that is the first point is that is called the simplicity. Second one is the performance wise, this is a very lightweight, because of as I told, they are not blocking any thread. They have suspend function, that means the task can run in one thread and maybe that can continue with another thread. They the task will not bound with the any thread. That's why it's a performance. The performance is good because of the thread is not bounded with any task. That is the performance is obviously performance is increased because there are three functions that is using only one thread. That is the improve the performance. Third one is structure concurrency. This is a very important point. This is a structure concurrency. This is a topic. This is a whole topic. I will tell you later what is the structure concurrency, but right now you can understand like this. Structure concurrency is like the structure way to manage the concurrency, making it easier to handle the cancellation or error. So structure concurrency का अगर हिंदी में समझे तो दे हैव द पैरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. अगर किसी चाइल्ड का टास्क अगर कुछ एरर आता है या आपने पेरेंट टास्क को आपने कैंसिल किया तो सारे आपके चाइल्ड टास्क जो होंगे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो इस कॉल्ड द स्ट्रक्चर concurrency. दे हैव सम टीप मेथड. अगर आपने पेरेंट को आपने कैंसिल किया तो आपके चाइल्ड आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो इसके बारे में हम अभी अब और भी डिटेल में बात करेंगे. तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सब वन टाइप ऑफ द बेनिफिट कि हम स्ट्रक्चर कंकरेंसी का भी यूज करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं. फोर्थ वन इज द
is the what is the called is the integration. This is a very easy to integrate and well integrated with Android and with another Kotlin library. If you are when I implementing this coroutine, then you will also you will check only one of the one code of line we have to for implementing. There is some library we have to write, and there are some called annotation like live data, life cycle scopes, and there are some multiple scope. With this implementation is very easy. So this is the part of the practical. Then I will tell you later when I implementing coroutines in my code. Okay, so I hope you understand benefits of the coroutines. Now I am going to the basics of coroutines. So basics of coroutines, how to create the coroutines, how to launch the coroutines, and so they so uh, there are the multiple way to create the coroutines or change the coroutines. First one is the called the launch. What is the launch? Launch is the function that starts a new coroutines that does not return a result but rather than the job object. So this is the hire and forget thing. Like if you are writing the launch function to start the coroutine, to start any job in within the launch function, so that time coroutines will not give any result of the job. They will give one object of the job. What is the object of job? That is the interface. That is the interface job. What is the job? Job is the interface that have the life cycle of the coroutines. Okay, the second one is the asynchronous. Async. Okay, so what is the async? Async is nothing but that is okay. Before going to async, I will give one example. This is the example. First is a function where in the function we use the coroutine scope dispatcher dot main that launch. So we should know about the what is the scope, how many types of scope, and when we will use the which type of the scope. So uh, here is the I will tell the about the scope. There are the multiple types of scope for there are the 5 types of scope, and when to use where to use when to say. I will tell it later what is the scope and how to use the scope. But for now you should you understand like this कि एक स्कोप जो होता है वो आपका आपकी थ्रेड की लाइफ साइकिल बताता है. अगर आपने एक्टिविटी में है तो एक्टिविटी के लिए अलग स्कोप होगा जो कि आपकी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के साथ बाइंड रहेगा. अगर आपकी एक्टिविटी आपकी क्लोज हो जाती है, एक्टिविटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस समय आपका जो स्कोप है वो भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Okay, that what is the launch? Okay, the second one is the dispatcher dotman, and इसके लिए हम इसका भी अलग एक लेक्चर बनेगा इसमें. व्हाट इज़ द डिस्पैचर्स एंड व्हाट इज़ डिस्पैचर मैन. तो अभी के लिए आप ये समझिए कि आपके जो टास्क होते हैं उसको रन करने के लिए या तो आप मेन थ्रेड में कर सकते हैं, या तो बैकग्राउंड थ्रेड में कर सकते हैं, या तो आपका एक और आईओ थ्रेड होता है, या फिर आपका जितने भी टाइप के थ्रेड होते हैं आपको खुद का एग्जीक्यूटर बना सकते हैं. तो इस टाइप की चीज़ को आपको कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस थ्रेड में करना है. तो जिस थ्रेड में आपको करना है आपको इस ब्रैकेट में रख के आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा भाई इस जॉब को आपको मेन थ्रेड में करना है, इस जॉब को आपको आईओ थ्रेड में करना है, इस जॉब को आपको डिफ़ॉल्ट थ्रेड में करना है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. तो अब आगे हमने बताया लॉन्च के डेफिनेशन से मैंने तुमको बताया कि जो भी हम अब हमारे पास इतना लिखने के बाद में हमारा एक कोरोटीन बन के रेडी हो गया है. अब आपको बस एक लाइन लिखनी होती है लॉन्च. ठीक है, लॉन्च लिखने से क्या होगा कि आप उसके अंदर जो भी आप जॉब लिखेंगे ना, आप जो भी जॉब करना चाहेंगे, जॉब आप लिखना चाहेंगे, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा, वॉट एवर द लॉजिक यू विल राइट इन साइड द लॉन्च फंक्शन. देन व्हाट इज इंटरनली डू, ये जो टास्क होगा वो आपका रन होगा किसमें, आपने जो डिफाइन किया डिस्पैचर डॉट मेन. एंड व्हाट इज द स्कोप इज द दिस कोरोटीन स्कोप. क्या होगा कोरोटीन स्कोप, जो भी आपका स्कोप होगा कोरोटीन स्कोप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. और जो आपने जो थ्रेड बोला है मेन थ्रेड बोला है वो आप उसको मेन थ्रेड में आप उसको रन कर रहे होंगे. ओके, तो व्हाट इज द एसिंग. होप आपको पहले तो लॉन्च का चीज़ पता चल गया होगा. I know there are some confusion related to scope function and dispatcher on main. I will tell you later because this is not the part of
This is not part of this topic. I will tell you in after 5 or 10 minutes. You will clear each and every line after watching this video. Second one is the async function. What is the async? Async is the function that starts a new coroutines and return the default object. Okay, so as I told in the launch function, the async function is the same, but they have only one difference. They returns the default object, which represent a future result. Okay, so just I want to say like I want to give one example. There you know the coroutine scope and dispatcher dot main. They are the launch function I told, and here we use the async. In the async I use the dispatcher dot io. So async is like who give one result ऑफ द एफर्ट. ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपको, मैंने आपको बताया कोई भी जॉब आपकी चल रही है, उस जॉब का जो रिजल्ट होगा वो आपका रिजल्ट कहाँ पर से आके सेव होगा, वो आपको मिलेगा कहाँ पर, इस रिजल्ट में. और रिजल्ट किस टाइप का होगा, डिफ़ॉल्ट टाइप का होगा. ओके, तो हम लोग इसमें अवेट लगा के उसका वेट करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्पैचर डॉट आई ओ में चल रहा है, तो आपका थ्रेड एक मिलेगा, इसमें एक लॉन्च हो जाएगा, एंड आपको वो थ्रेड में आपका वो जॉब रन हो रहा होगा. एंड आफ्टर रनिंग द जॉब, मतलब आपका जॉब रन होने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. अवेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका जॉब है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये इस थ्रेड को ब्लॉक कर देता है, इस लाइन में वेट करता रहता है. एंड जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है देन वो उस लाइन के आगे बढ़ जाता है. तो रिजल्ट के अंदर आपका डेटा होता है जो आपने एसिंग ब्लॉक के अंदर रिटर्न किया होगा. ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे आपने रिटर्न क्या किया है, आपने रिजल्ट. सो तो क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट. ओके, तो देयर अनदर इज फर्स्ट, जस्ट आई what I revised. One is the launch, second one is the async, and third one is the with context. With context is very important, because if you are switching the job, switching the thread, context of the thread, then we need the with context very well. With context the function. Okay, so in the with context there is a very easy implementation. You have to use like with context, and in the with context we will add the dispatcher.io or dispatcher.main or dispatcher dot default, whatever you want. Means dispatcher.io means that you want to run the task in the background in the io thread, that is called the dispatcher.io. So with context is nothing but that is switch the thread from the current thread. मतलब like you suppose you are in the main thread and you want to go to the io thread, then we will use what, with context. Okay, and with context did not give any result, so don't worry. For if you want any result, then of course you should use the async function. Okay. So as I told, there are some launch builders, basic builders I already taught you, and now I will teach you what is the dispatchers. There are the three types of main dispatcher we used in code. First, dispatcher.main, very simple. Dispatcher.main, what is the dispatcher.main? That means run the task in the main thread, that is the dispatcher.main. What is the dispatcher.io? What is dispatcher.io means the task that is use the io thread, that want to use io thread, that have some operation go to the waiting state. That time I will use the dispatcher.io. That is dispatcher.io and dispatcher.main. What is the dispatcher.main? When I have some CPU highway task, then I will use the dispatcher.default. So can I use, there one question, can I use dispatcher.io thread in the CPU highway task? Yes, we can do it, but dispatcher.io is the optimized for the IO operation. Okay, if you are using highway task in the IO thread, there are no issue, but they have some issue. You will face some issue on the optimization. That's why it have one guidelines
Dispatcher.default should be used for the heavy task of the CPU, and dispatcher.io will use for only for the IO thread. Okay, so give me I give you some one example of the thread, like you have, first of all, because of you, if you want to launch one coroutine, they definitely you want one scope. So suppose you have one coroutine scope. In the coroutine scope, there dispatcher.main will launch the scope. This the builder. I already discussed about this, and with context I discuss. In the with context I use what, dispatcher.io, where I can use the IO operation. If you want, after some time, if you want some job, if you have one job want to run in the default, then you will do in the dispatcher.default. Okay, there is one more dispatcher, that is called the dispatcher.unconfined. Okay, this dispatcher.unconfined is not used in your project. That is used for the use cases, test cases. So dispatcher.confined means that they run in the current task until the suspend functions are not called. If the suspend function called, they may be run in the main thread or background thread, depends on the compiler. So dispatcher.unconfined used only for the unit testing. If you are going for the unit testing, that time you will use the dispatcher.unconfined. Otherwise you have to use only three dispatchers. First is the main, second one is the IO, and third one is the default. That's it. There are no other dispatcher you will use in your code. Okay, so so very important point, what is the suspend function? Very important, what is suspend function? Because of the this is suspend function is the very important for the coroutines, because of if there are no suspend function in the coroutine, then there are no difference between Rx Java and coroutines. Everyone using the Rx Java in the coroutine code, Kotlin code. The because of the suspend function, coroutines is the lightweight. I will tell you very clear कि क्यों हम suspend function को यूज कर रहे हैं, और कैसे हम इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और क्या है एग्जैक्टली क्या है. तो अगर आप समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ. सस्पेंड फंक्शन आपका ऐसा होता है कि आपने कोई एक जॉब है, आपके पास एक टास्क है जिसको आपने रन किया. रन करने के बाद में आपका वो जॉब जो है वो आपको 1 सेकंड में रिजल्ट दे रही है, बट उसमें से 400 सेकंड जो 400 ms जो टाइम लग रहा है, वो आपको API कॉल करने में लग गया. API कॉल गई, अब API से डेटा आएगा, 400 ms का वेट करेंगे. ठीक है, तो ये जो 400 ms का जो टाइम लगा, बाकी आपका जो 600 ms का जो टाइम लग रहा है वो आपके एंड्रॉयड ऐप के अंदर एजुकेशन में लग रहा है. पर जो 400 ms का जो टाइम लगा, उस समय क्या होगा कि आपका वो थ्रेड जो है, अगर सस्पेंड फंक्शन नहीं लिखोगे तो आपका वो थ्रेड जो है वो 400 ms के लिए भी वो थ्रेड बाउंड रहेगा. ओके, एंड अगर आपने उस फंक्शन को सस्पेंड बना दिया, मीन्स द फंक्शन सपोर्ट्स दैट फंक्शन सपोर्ट्स मीन्स द फंक्शन सपोर्ट्स अ पॉज एंड रिज्यूम फंक्शनैलिटी. मीन्स द फंक्शन कैन बी पॉज एंड रिज्यूम लेटर. तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. अगर आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको सस्पेंड लिख दिया, और बीच में आप उसको रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा क्योंकि आपने सस्पेंड बनाया. इंटरनली क्या करता है, सस्पेंड फंक्शन एक कंटिन्यूशन ऑब्जेक्ट को रखता है, उसके अंदर मशीन कोड होती है. ठीक है, तो क्या होता है आपने जब आपने उसको पॉज किया, तो कंटिन्यूशन वेरिएबल, कंटिन्यूशन ऑब्जेक्ट के अंदर उसका मशीन स्टेट आके सेव हो जाता है कि अच्छा भैया ये आपने पॉज किया तो इसका करंट स्टेट ये है. अब जब आप उसको फिर से रिज्यूम करते हैं तो वो फिर से कंटिन्यूशन फंक्शन में जाता है, उसका जो लास्ट पॉइंट था पॉज का वो जाके जो सेव होता है उसी के आगे उसको रिज्यूम करता है. दैट इज़ द सस्पेंड फंक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरनल कैसे वर्किंग होती है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि उसको वो कंटिन्यूशन ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है, और इसके अंदर जो मशीन स्टेट होती है वो कैसे काम करती है. ओके, तो अभी आपने ये समझा व्हाट इज सस्पेंड फंक्शन, कि वो आपके किसी भी स्टेट में पॉज हो सकते हैं और कंटिन्यू हो सकते हैं. सो अब आपके कोई थ्रेड है, वो आपका पॉज हो गया तो वो कोरोटीन्स क्या करेगा, उस थ्रेड को रिलीज़ कर देगा उस समय.
ठीक है। हमने एग्जांपल आपको अभी बताया, 1 सेकंड में अगर आपको कोई टास्क खत्म होने वाला है जो 400 सेकंड आपका आईओ स्टेट में जाएगा, तो 400 सेकंड के लिए, क्योंकि आपके पास कोई टास्क नहीं है थ्रेड को देने के लिए, तो उस समय वो रिलीज़ कर देगा और उस समय किसी और टास्क में जो 200 mS 300 mS में जा रहा होगा उसको लगा देगा। ठीक है। और जब आपके 400 mS के बाद जब आपका टास्क वापस आएगा, जो आपने जो टास्क किया तो वो वापस आ रहा होगा, देन उस समय क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अच्छा करंट जो थ्रेड है वो अगर ब्लॉक्ड है, देन वो ही विल कोरोटीज एलोकेट द न्यू थ्रेड, अदरवाइज दे विल गिव द सेम थ्रेड। सो ये आपका सस्पेंड फंक्शन कहते हैं। तो ये हो सकता है आपका 3 फंक्शन हो, 3 फंक्शन के अंदर 3 अलग अलग जॉब चल रही है, बट वो सारी तीनों जॉब्स आपकी एक थ्रेड में चल रही है बिकॉज ऑफ द सस्पेंड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द कोड रूटीन्स। We should know about this in the detail because of this the very important point. So interviewer always ask the questions related to suspend function, always ask the question related to continuation, always ask the question about the what is the machine state. Okay, so we should know about each and every lines very carefully, and इसका जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही एक बिल्कुल सिंपल सा है अभी। तो एक हमारे पास डेटा है जो कि हमारा 1 सेकंड में, जो मैंने आपको बताया 1 सेकंड में आपको डेटा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जब 1 सेकंड का जो डेटा है जो एपीआई कॉल किया, तो 1 सेकंड के लिए तो वो थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। वो क्या होगा, क्योंकि ये सस्पेंड फंक्शन है, अभी भाई 1 सेकंड के लिए थ्रेड बाउंड नहीं होगा। ये क्या करेगा भाई, थ्रेड को रिलीज़ कर देगा। 1 सेकंड के बाद ये जब ये लाइन आएगी यहाँ पर चेक करेगा कि अच्छा भाई जो मेरा नया थ्रेड है वो मुझे एक थ्रेड दे, कोरोटीन विल असाइन द सेम थ्रेड और असाइन द एनी other thread, whatever the thread is available that time they will provide you. Okay, so that is the suspend function. Okay, I hope you understand about the suspend and internal architecture of the suspend function. That is very important. Okay, let's go for the next topic, that is called the coroutine scope. Coroutine scope is a very initial way to start the coroutines. That is a scope. ओके, बेसिकली वाई आई एम यूजिंग द स्कोप, क्यों ये स्कोप का मतलब आया, क्या इसका मतलब है। ये तो आरिक जावा में होता भी नहीं था। थ्रेड मुझे थ्रेड बनाना है, थ्रेड डॉट स्टार्ट किया, लॉन्च किया, ख़त्म कर दिया, बट हमने क्यों बनाया कोरोटीन स्कोप्स। सो यू नो, इन द एंड्रॉयड every code is written in a life cycle. If you are launching any activity, that means you are bound with any life cycle of the activity. Suppose you launch the activity, there are some activity life cycle. You see the on create, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy. Each of the life cycle state tells one thing. Okay, on create means this is the very initial thing to start the activity. On start means that is called after the on create, and we can write the logic accordingly on stop and on destroy as well. If any activity called the on destroy, that means we should destroy all the object related to the activity. So in the thread, because of if you are using the normal thread, then there are the multiple memory leaks, and you are using the RX Java, there are multiple times we got the OMs because of the thread will not be destroyed or destroyed, or you can say the means the thread can't be destroyed because of we need to manually destroy the thread in the on destroy method. So if you are not dispose or destroy the thread in the on dispose function, then will contribute in the OMs, out of memory exception. So I use the scopes. A scope will tightly bound with the component, whatever the component. If you are using the activity, then they tightly bond with the activities life cycle. If you are using the fragment, that the coroutine scope will tightly bound with the fragment life cycle. Okay, if you are using any other view, then that view will means if you are using any application level things, then the coroutines will bound with the application lifecycle. So let's discuss about in the detail with go to the one by one scopes. First one is called the global scope. Okay, what is the global scope? Global scope is nothing but that is the application that is tightly coupled with the application scopes. Okay, if you are using the global scope dot launch, because of if you are using the coroutines, then first line should be the scope.
because in the to the if you are using any coroutine scope, we have to tell the compiler to what is the scope and when will this will be start and when will this be destroyed. Okay, we should know, we should tell in advance when I am using the coroutines. Okay, so when you tell the global scope, then compiler knows, okay, that is the application scope lifecycle, that is tied with the application scope lifecycle. That means when how long means that if the application is destroyed, then only global scope will be destroyed, otherwise not. Okay, so second one is the uh, global scope. That is very similar, syntax is very similar, but they are logically changed. Only the logically change means the coroutine scope is not the life cycle aware by default. Okay, so when this will be used, if you have any module, any classes that is not the life cycle aware component, that time I will use what, coroutine scope. Okay, so that we will say like, if you are using any class that is not the activity, not a fragment, not any component, then we will use what, coroutine scope. If you want to launch any scope, if you want to run the task in the background, that time what we will use, we will use the coroutine scope. That is not the life cycle aware, because of their they didn't bind, they doesn't bind with any activities or fragment life cycle. Okay, there it is example of initialization of the scope. In the coroutine scope, we need the what, because we need the dispatcher dot main means by default in which thread this will be executed. Okay, and the job object is, what is the job is the interface that have the current state of the scope. Okay, so of course this is the not the life cycle aware, then we have to destroy our uh, we have to destroy or dispose the thread manually. In the on destroy function of the class, we should be manually destroy it when here is the is cancel function. Okay, we have to cancel it manually, otherwise this will contribute in the OMs. So the guidelines is like, if you are if you are using a class, okay, that is not the life cycle aware, then we should pass the scope from the activity. Means there is one activity called the class, then in the from the activity we should pass the scope to the class, then the class will use the same scope. So that is the life cycle aware. In case there are some situations when we didn't get any scope, that time we should use coroutine scope, otherwise we should use only the component scopes. With whatever I told, that is the coroutine scope. And I will tell next one is the view model scope and life cycle scope. And next we will go to the view model scope, that is very similar to the life cycle that is very similar to the global scope. The other difference is the scope is within the view model. If you are using any view model, then we will direct use the view model scope dot launch. Okay, you know the difference between launch and async. You can use anything whatever your requirement. If you want any data and any return from the job, then we will use what, async function, otherwise we will use what, job launch. Okay, so in the view model scope, we will use what, we will use in the view model scope, we will use the launch and async function. And the scope, whatever the what is the scope, is the scope is the within your view model. If the view model is destroyed, is on cleared call the view model, then also view model scope will be destroyed. There are no memory leak, there are no OMs. Okay, that is a life cycle aware. Okay, the third one is the life cycle scope, that is very similar to the view model scope and global scope. The difference between that have the is that tightly coupled with the life cycle owner, means such as the activity or fragment. If the activity alive, then we will use then only the life cycle scope will be alive, otherwise destroyed. Okay, here is the example. They have one fragment. In the fragment we will use the scope dot launch, and how long it will alive, when the activity or fragment will be destroyed, then this will be also destroyed. Okay, that is the overall
that is the overall coroutines. We should know the basic. That was a very basic thing we should know when I start the coroutines. And more than the 70% of the things I discussed in this tutorial. And here is some more pointers, 4 or 5 pointers, which is a very basic, that is a very easy. I will tell you one by one how to set up this. Okay, there are some dependency, there are two dependency, the core and android. The core dependency is we have to use, and for the android coroutines we will use the coroutines advanced android. Okay, there's a version we should check in your repository of the coroutines. Match the version, whatever the newest one, we will update it later. Okay, so there are some use cases. There is one like a single network call and multiple network call. Okay, so this type of the practical example we interview asked in interview. So I will tell this in the practical. Okay, so go to the next part, that is called the error handling. Error, how to handle the error. There's one is of try catch. If there are some error, then you use the try and catch. In the catch we will get the error. Okay, if there are multiple errors, then we will use the try and catch. Okay, that is a very simple way. Okay, on and I used this code in the daily basis of for any function. If there are function that throwing any error, then I how to handle the error. That's just very simple to that. There are no new logic to handle the error in the coroutines. Okay, so last one is the handling timeout. So how to handle the timeout. So here is the one function name is the with timeout. In the time, what is the timeout? First one is the what is timeout. If the function take them too much time and want to bound with the time key. Okay, there is the one API we should we know we have to take one limit for 100 ms. If the API get result in 100 ms, then I will execute this task, otherwise not. Okay, so this type of thing we will use the with context. Suppose this is a 200 ms task, fetch the data from the database. Okay, if the task comes from the database within the 200 ms, then only print dates this, otherwise they will give the one exception, name is the timeout exception. Okay, so all the pointers are covered in this. Okay, and the conclusion is I'll always told the coroutines is very important and easy to implement in the android. Okay, it's very effective to handling the error. There's some suspend function that have the lightweight, that makes the lightweight your coroutine and code, and that is very easy to implement. Just like launch that, just have to just have to write the scope and then call the launch. Okay, so that is the conclusion. It is very easy. If you are using the Kotlin, then we must be use the coroutines, because nowadays every project is using the coroutines. Okay, so in the next video I will go for the practical. We'll go for the Android Studio, how to start implementing the coroutines, and what is the issues we'll face if you are building any libraries in coroutines, and how to implement the coroutines, and in the activity, what is the scope in the activity, how to add the scope, and how to destroy, how to dispose the scope if there are no life cycle aware activity. Then at all multiple use cases I will cover in the next class. Because of that class, this class is more than the 40-45 minutes. Then I will create the next block, next practical example in the next video. Okay, thank you for learning. Happy coding.